Assalamu alaikum. We're going to start in 3 minutes.
Assalamualaikum everyone. I think we can start now. So my name is Farva and welcome to the Android Study Jam, new to programming track session 1. Now this is for people that have no prior knowledge or have basic knowledge in Kotlin programming, which is what is the programming language we use for Android. And so first, who am I? I am Farva. I am the GDSC lead at IST and the founder of GDSC at IST. This is our first time in this chapter. So we're relatively new at this, but we're excited to bring new events. And this is actually our first collaboration with another university. Next, we have Osman Khan. There is someone who is going to introduce him for us. Oh, yes, Farva. So, hello guys. I'm Abdul Hadi. I'm the technical lead for GDSC NUML, and unfortunately, Usman won't be joining us today for the meeting. So, I will be carrying on his task for the rest of the event. Thank you. Over to you, Talal. Assalamu alaikum everyone. I am Talha Momin. I am currently doing computer science from Institute of Space Technology. I am technical lead at GDSC IST and I'm looking forward to learn from all of you guys. Over to Mohsin. Hello, assalamu alaikum to everyone. My name is Mohsin and I'm a computer science student currently pursuing my fifth semester. And I am a technical team member at GDC NUML. Looking forward to work on the event. So can you guys hear me fine? Yes. Okay. Yes. Assuming you're in the right place, here are some of the prerequisites that will be helpful for this track. Having basic computer literacy and basic math skills is recommended. You'll also be needing a computer and access to internet to take the online course, which you probably have if you're in this meeting. And after this short presentation, we'll all be working independently on the course, but you will be guided by the tech teams of both NUML and IST, and use headphones to play the video so it doesn't disrupt others around you. It is also helpful if you have an Android device so you can test your application. A USB cable will be needed for connecting your phone to the computer. If you don't have an Android device, it's okay. You can still use an emulator for later pathways, but you won't be needing Android Studio or emulators or any such things for this session as of yet. Now, before we start officially, I want to know a little bit about you. Like, why are you here? What are your goals? How do you plan to achieve them? And you can just take like 2 minutes to write that down in the chat box or like say, unmute yourself and say the answers. Great. Homer, could you tell us like what exactly you plan to do by learning Android? Like applications बनानी है, projects पे काम करना है, किस तरह की चीजें? Yes, you can. Anyone can open their mics just right away. अच्छा मुझे एप्लीकेशंस इसलिए बनानी है कि कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स करने हैं एंड कुछ एप्लीकेशन आइडियाज़ हैं डिफरेंटली तो वो इम्प्लीमेंट करने हैं तो इस वजह से एप्लीकेशन डेवलप करना सीखना है और वो उसके लिए एंड्रॉयड
Okay, that's great. And Umema said, I just want to be one of the Android developers, so I'm here to improve my practical and technical skills. That's amazing. This is, though, a first, but it is definitely a way to get started in Android. Someone said, I am also the computer science student, and the reason I'm here is because I plan to learn as much as I can related to Android development, and to achieve them, I believe I can participate in activities conducted by GDSC. That is a great thing as well. All right, I think with that, let's move on to the next things. You can continue sharing your responses if you like on the chat box as well. So let's talk about what you will learn as a part of this new to programming track of Android Study Jams. First and foremost, the goal is for you to build your first Android applications. To do this, you need to install Android Studio on your computer, which is an application to build Android applications. Along the way, you will be exposed to programming concepts and the Kotlin language. At the end, we'll also talk about resources on how you can continue learning and building apps beyond this event. So today's schedule is what this looks like basically. First, we have a short presentation, which we're doing right now. We're covering some basic logistics and a high-level introduction to the concepts to help you with hands-on portion of the session later. Once I'm done talking, you'll be able to dive into the course. You'll be working independently and guided by your technical teams. So this is what our website for the first unit looks like. You'll work on this course as like it's a free online training course, and it's developed by Google for people like yourself to learn how to build basic Android applications. These links to these pages, if you're not registered already for the course, then you can follow the links that will be shared in the chat box and work on that as soon as we're done with this short presentation. So the course is made up of units, and the units are composed of pathways. And what pathways are, we're going to get into that a little later. But in this track, we'll focus on the first unit, which is shown here. It's been made up of 4 pathways. You can see like 4 blocks in this picture, and you'll work on the first one, which is the introduction to Kotlin. So you may be wondering, what is a pathway? It is an ordered sequence of activities to learn a specific skill. An activity can be a video, a hands-on coding tutorial known as Code Labs, an article, or a quiz. You can see at least 4 activities in the first pathway, and these are the ones that we'll be covering today. All these activities are meant to help you reach specific learning objectives by the end of this pathway. Now, at the end of every single pathway, we have a quiz. And here's what a sample quiz looks like. There are no limits to the number of retries for this quiz. It is just for your own understanding and see your own progress. But obviously, don't try to just look for the right ones. Try to understand why they're right as well. And after every quiz, you can earn badges, and these badges will be used in your Google Developer profile. If you've registered for the course already, then you must have made a Google Developer profile. If you haven't, then you can go forward and register yourself now as well. This Google Developer profile is like for anyone and everyone. These badges will show your experience to the developer community on Google. So next is the concept overview. Now that you're familiar with the learning platform and how the course looks, let's dive into some important concepts that you'll be learning about. Now, in this course, you'll be learning about how to code in Kotlin. Kotlin is a programming language that you use to build Android application. It's more modern and popular and known for helping developers be more productive. It allows you to be more concise when you're writing your code, and you can write safer code that's less prone to errors. As a result, many great language features, Kotlin has quickly gained momentum in the industry, and it is reportedly one of the fastest growing programming languages, according to GitHub, and ranked the 4th most loved programming language among developers. So pathway 1 is focused on helping you understand the basics of Kotlin, as its name suggests. And to make it easier for you to learn, you'll be writing code in Kotlin Playground. The link will be shared for that as well. Or you can follow along with our tech team later after this short presentation, which you can access via the web browser. The site looks something like this. You can write your code in this window and hit the green arrow to run it. The result of the code, known as the output, will show up at the bottom of the window.
where it says Hello World. This Hello World program is like the most basic program you could come up with. A lot of the computer science students here or the electrical engineering students here may be familiar with this, but for those who aren't, this is basically like an online compiler, so you don't need Android Studio or anything for this. Pathway 2 is where you create your first application. For this, you do need Android Studio. This official tool that professional developers use for Android development is like where you'll be writing your Kotlin code and building applications. If you can see in the picture here, this is what the application looks like. You will send you like a guide to how to download Android Studio, since it's a little complicated as well, and you can do this after the presentation or after the first pathway that we complete today. Now, in Android Studio, you can also use the Android emulator, which can emulate various Android devices on your computer. This emulator lets you run your application, and it provides almost all the capabilities that a real Android device would have. If you do have a physical device and want to use it, there are also instructions in Pathway 2 to get you to set that up. The links that are being shared in the chat box are how to you like get to Pathway 2, Pathway 3, and 4, and so on. So lastly, the third pathway, sorry, not lastly, fourth is the last pathway. You'll learn basic concepts of customizing the user interface of a simple application. This user interface, also known as UI, of your application includes what the application looks like and how the user interacts with it. You can see in the pictures here, like that's what you use. Like जैसे हम normal phone में use करते हैं, the user interface that you have WhatsApp के लिए, Google के लिए, all these things are in the third pathway. So the layout of an application is a design or arrangement of what the user sees on the screen. And in Android, these are made up of views. So basically, here are some of the examples of the types of views that are provided by an Android application. There's a text view for displaying text, image view for images, a button to perform some action when tapped. Now that's it for now, and if you'll get started with the actual course in a bit. Work at your own pace, and if you get stuck, you can ask any of the tech team members that are going to be facilitating you throughout the course, and they'll be available. You can ask any questions you have in the chat box, or you can unmute yourself as well. Now there will be a few, like the first part and the second part of the first pathway, that are going to be presented. There are videos, and the NUML people are going to be presenting that from. I'm going to stop sharing my screen so you can continue yours. Thank you so much, Furqa. Am I audible to all you guys? Yes, you're audible. Okay. So we'll start with Android Seekho. Okay. So the introduction which Furqa gave is basically like कि आप लोग मतलब ये जो competition है Android Seekho उसमें किस तरह participate कर सकते हो. If you guys can remember last couple of years पहले Google ने क्लाउड सीखो के नाम से एक प्रोग्राम निकाला था जिसके अंदर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गूगल ने लोगों को ट्रेन किया था. दे गेव नॉलेज टू द GDC Google Development Cloud Platforms. इसी तरह इस सीज़न आफ्टर raving success of क्लाउड सीखो गूगल ने एंड्रॉयड सीखो का एक सीज़न निकाला है जिसके जैसे कि फरवा ने बेसिकली सारे आप लोगों को पाथवेज बताए हैं. उसी को यूज़ करते हुए आप लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करोगे और फर्दर ऑन उनकी जो गूगल आपको स्वैग्स प्रोवाइड करता है वो आप लोग लोगे. So the question is, how do you participate? Well, there are 4 simple 8 steps जो कि आप लोगों ने follow करने हैं. The first step is कि सबसे पहले ये जो ब्लू रंग का बटन नज़र आ रहा है इसको ऊपर आपने क्लिक करना है, रजिस्टर करना है, and you make an account and you register yourself on this website. The next thing is you need to ensure that you have a Google developer account
जिस तरह के फरवा ने बताया था, गूगल डेवलपर अकाउंट इज़ नॉट समथिंग कि जो सिर्फ डेवलपर्स के पास होना चाहिए, बस आपको टेक कम्युनिटी के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है कि और फर्दर ऑन जब आप आगे आगे जाके सीजन में पार्टिसिपेट करते हो और बैचेस आपके पास आते हैं, तो इस तरह मतलब आपके पास आपकी स्किल सेट शो होते हैं आपकी टेक्निकल कम्युनिटी के अंदर। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपने रजिस्टर करना है। सेकंड, आपके पास गूगल डेवलपर का अकाउंट होना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आपके पास जो एंड्रॉयड बेसिक्स कोटलिन के अंदर 5 एक्चुअली आपके पास आप कह सकते हो चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर के अंदर डिफरेंट पाथवेज हैं, जो कि जैसे कि फरवान अभी बताया था कि लेआउट, यूआई, कोटलिन बेसिक्स, ये जब 5 चैप्टर्स आप पास कर लोगे उसके बाद आप के नाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड्रॉयड सीखो के अंदर। और हर के नाम है चैप्टर के अंदर जाकर आपके पास एक आखिर में क्विज आएगा जो कि आप सब ने पास करना होगा इन ऑर्डर टू गेट द स्वैग्स। सो सबसे पहले काम आपने ये करना है कि 14 नवंबर से पहले तक कंप्लीशन फॉर्म आपने भरना है। फिफ्थ स्टेप इज दैट, and sixth step is that you guys have to join us for a virtual quiz happening on 20 and 21st of November 2021. And details for the quiz will be shared post on social media using our hashtag Android Seekho. Obviously अगर आप कोई भी टेक्निकल इवेंट ज्वाइन करते हो तो इट्स बेटर कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको शेयर करो ताकि वो लोग जिनको नहीं पता उन्हें भी पता चल सके कि व्हाट यू गाइस आर लर्निंग, ताकि उनका भी इस साइट पे रुझान हो सके। एंड एट स्टेप इज़ कि आपको स्वैग्स मिल जाएंगे। तो दैट वाज द बेसिक इंट्रो ऑफ एंड्रॉयड सीखो। एंड्रॉयड सीखो है क्या चीज़ और इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। I'll be sharing the link with you guys in the chat box. एंड आफ्टर एंड्रॉयड सीखो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू कोटलिन, जो कि इस इवेंट के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक सिंटेक्स ऑफ कोटलिन के कोटलिन के अंदर आप प्रोग्राम किस तरह लिखते हो। एंड फर्दर ऑन हमारे जो टेक्निकल टीम के लीड्स हैं दे विल डिस्कस विद यू द हैंड्स ऑन कि आपको किस तरह लाइव आप कहाँ सारा काम कोटलिन में कर सकते हो। सो विल स्टार्ट विद द वीडियो फर्स्ट कि आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि कोटलिन बेसिकली क्या चीज़ है एंड व्हाई डू वी यूज इट। Welcome to Android Basics in Kotlin. In this course, you will learn the fundamentals of how to build Android apps. We're from the Android team at Google, and we'll be your instructors for this course. I'm Dan. I'm Kat, and we'll be here guiding you throughout your journey. And I'm Megan. We'll do our best to explain things clearly with step-by-step instructions. It's hard to imagine life without our phones. And in this course, you're going to have a chance to learn how to build an app that runs on one of these. It honestly feels like a superpower to know how to build an app, to take something that's an idea in your head and put it on your phone. And it's not just your phone. There are over 2.5 billion Android devices in the world. That's phones, tablets, TVs, watches, and even cars. Imagine how cool it would be to make an app that your friends can use. The apps that you use on your phone are often quite complex. They have whole companies and teams of engineers working on them. And all those engineers had to start at the beginning. So in this course, we're going to focus on building a series of basic Android apps that can run on a phone. The course is split up into units. Each unit is made up of several pathways. Pathways are composed of videos, code labs, and quizzes. And, drum roll please, you will earn badges along the way. You'll also be building up your developer profile, which you can use to show the skills you've gained throughout this course. By learning the fundamentals of programming and the core concepts in Android, you will have a solid foundation to build off of. You'll learn how to use Android Studio, the tool we use to write our code. And you'll be learning Kotlin, the recommended programming language for developing Android apps. At its core, a programming language is used to tell a computer what you want it to do. It's similar to learning a foreign language, but instead of speaking to people from another country, we're communicating with the computer. We'll get into more details of learning Kotlin later, but first let's talk about what you need to start this course.
To get started, you need a computer and an internet connection so you can download Android Studio. You don't need any prior programming experience, but we do require that you have basic computer and math skills. Knowing basic math is useful when you are programming because of the problem-solving skills involved. It's also helpful to have an Android device, phone or tablet, to test your app on. If you don't have one, that's okay. We'll show you how to simulate an Android device on your computer with something called an emulator. It's also great to be familiar with using Android apps. If you haven't used Android before, you'll learn this along the way. Above all, the most important requirement is your motivation and willingness to learn. It's going to be a challenging but rewarding process if you stick with it. You may be asking, can I get a job as an Android developer after this course? Well, the answer is not quite. We're going to prepare you with the basics, and there are more advanced classes you can take and more practice you should do on your own to pursue the career path of a developer. Now, you might be asking, how long will the course take? That really depends on how much you already know and how much time you can invest in learning the material. Anywhere from a few weeks to a few months is realistic. No matter where you come from, this journey will be challenging, interesting, and we hope also fun. By the end, you will have built a collection of apps that will show you a glimpse of what's possible with Android. We are super excited! Super excited! We're super excited that you decided to join us, and we welcome you to this course. Welcome! So that was the introductory video. So this one is how would you build your first Android app in Kotlin. So let's get started with it. Welcome to Unit 1, the beginning of your amazing journey. In this unit, you will learn important concepts in Kotlin and Android development to get you set up for success. This unit is split up into 4 pathways. In the first pathway, we will dive right into learning some basics in a programming language called Kotlin. Kotlin is a modern programming language. It's efficient to write and has features that help prevent mistakes in your code. It's rapidly becoming one of the most loved programming languages in the world, and we at Google recommend it for building Android apps. In the second pathway, we'll help you set up your computer. We will teach you how to use the same tool that professional Android developers use to build their apps. It's called Android Studio, and you'll be installing that on your computer. Once it's set up, we'll walk you through how to create and run your first Android app. This is always a magical milestone. In the third pathway, we'll make a birthday card app. You'll get to customize the app for someone special in your life and surprise them with it. In the fourth pathway, we'll learn how to make an app that has an on-screen button that can be clicked. You'll write Kotlin code for how the app will behave when the user taps the button. This will unlock infinite possibilities for the types of apps you can create. Don't worry, we know it's a lot, but we'll be guiding you through the pathways, and we're confident that you can do this. It's normal to feel overwhelmed with all this new information, so take it bit by bit. It takes time to learn and digest the material. With each app you create, you will gain more confidence in the skills you are building. Before we begin, let's double check that you have everything you'll need. You'll need a computer with internet access that you can install Android Studio on. Make sure that your computer meets the requirements linked below. To see your app in action, it's helpful to have an Android device and a USB cable to connect it to your computer, but it's definitely not required. Let's get started! Okay, so before passing the control over to Tala, अगर आप लोगों का कोई question है regarding anything, you guys can ask in the chat or you can unmute your mic as well. किसी को कुछ समझ नहीं आया क्या चीज़ है ये एंड्रॉयड सीखो क्या चीज़ है वो पूछ सकता है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है. We guys are here for you. अदर भाई ये इस वेबसाइट पे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होंगे ना? जी जी एग्जैक्टली, आपके पास ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होंगे. नेक्स्टली हम लोग तला की तरफ मूव ऑन करेंगे और एग्जैक्टली वो आपको बताएगा ड्यूरिंग किस हैंड्स ऑन के मतलब आप कोटलिन में किस तरह कोड लिखते हो और किस तरह सब कुछ मतलब अरेंज होता है. तो जस्ट वेट शॉर्ट टाइम, उसके बाद हम लोग आगे फर्दर ऑन मूव करते हैं. सो आई एम unsharing my screen. Tala, the control is over you. Thank you, Hadi.
I've shared the link in the chat box. Okay. मेरी स्क्रीन शेयर हो रही तो मुझे बता दीजिएगा। Yep, शेयर हो रही Yes, है। Talha. सही है। सो हम लोगों ने पहले 2 इसके यूनिट्स कर लिए हैं वीडियोस के, उसमें अब हम लोग वी आर गोइंग टू मूव टू एक्चुअल इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल व्हिच इज अ कोड लैब। सो है वो सामने जिना पार दुकान भाई। अच्छा ये दर्जी नहीं थे। So this is the code lab of this is our first tutorial, which is write your first program in Kotlin. Make sure you are signed in into this website. तो इसमें स्टेप आप लोग इसको फिनिश करोगे ना इस पूरे ट्यूटोरियल को, तो आपको एक बैच मिलता है डेवलपर गूगल डेवलपर्स के लिए। So before we actually get into actual coding, we need to know a couple of things. Number one is, what is a program? A program is a series of instructions for the system to perform some action. For example, a calculator, or for example, a program which creates a birthday card. And now to give these instructions or series of instructions to the computer, we need to know the language of our computers. So for that we use programming languages, and we are going to work in Kotlin. Now Kotlin is a modern object-oriented programming language created to help developers write code efficiently and with few edits. Kotlin is mostly used for Android development, Android apps, and it is also used as a server-side application or server-side applications. Now we already talked about what you're going to need for this whole tutorial. First pathway, that is just a computer with a modern browser such as Google Chrome or any browser which can run this website, Kotlin Playground. This is going to take a while. तो ये Kotlin Playground जो है ये एक interactive code this can run on any browser. You can also use this on your mobile if you want to for some reason. So before I start explaining what this is, we are going to run this code by pressing this green button here. So this is going to display us an output of hello world. So this is our output. This is the instruction we are giving to this compiler. Let me just change this. Now if I were to change this instruction we are giving, this is a string. This is a built-in function print line ln, जिसमें ln जो है line है और ये print करता है. So हम इसको change करते हैं welcome to. So this is going to print another output now. Instead of hello world, this is printing welcome to Kotlin. So now this इसका इस language का structure हम लोग देख लेते हैं. Fun stands for function, and man is the first function. This will be in every Kotlin program. Without this, you cannot call other functions inside this. So let's extend this program a little bit. I'm going to write print line Android. Now as you can see, we have another string printed on the screen which is saying Android. Now if I remove these quotation marks, अब हमारे पास क्या होगा, कोई बता सकता है? वेल अब तो एरर आएगा, ठीक है, एरर आएगा जी, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि प्रिंट लाइन जो है एक स्ट्रिंग लेता है. ठीक हो गया. अब अगर
हम लोग इसको दोबारा से कोटेशन मार्क्स दे देंगे, दोबारा प्रिंट करेगा। अब कोटलिन के अंदर दो फंक्शन है प्रिंट के, एक प्रिंट ln है जो कि प्रिंट लाइन है, इसी तरह का एक और फंक्शन है वो है सिर्फ प्रिंट। if I print this is not going to print on another line. Let's check this out. You can see इसको अगर मैं so this print functions only prints in the single line horizontal, और ये जो है इसके आखिर में हम लोगों ने एक लगाया होता है एंड करेक्टर जो है ये, इससे नेक्स्ट लाइन आ जाती है। सो दिस इज आवर फर्स्ट मिनी प्रोग्राम इनसाइड कोटलिन। इसकी समरी अगर हम लोग देख लें, सो यू कैन रीड ऑल ऑफ दिस एज वेल। हम लोग ने ये भी कर लिया है, मॉडिफाई करना था। सो अगेन फंक्शन इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड, तो जो कीवर्ड होते हैं हम लोग जी, अगर हम प्रिंट एलन या प्रिंट को एम्प्टी छोड़ दें फिर क्या होगा? प्रिंट को एम्प्टी छोड़ देते हैं, एम्प्टी में स्पेस डालना है या फिर ऐसे छोड़ना है? ऐसे ही छोड़ दें प्रिंट एलन या प्रिंट को, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर प्रिंट एलन लिखा होगा तो नेक्स्ट लाइन पे नहीं चला जाएगा? ये भी देख लेते हैं, लेकिन यहाँ से एक दफ़ा लेस लाइन में चला गया पहले प्रिंट लाइन में इसमें, तो हम लोग दोबारा नहीं चेक कर लेते हैं। ये देखें एक लाइन में एक और लाइन स्किप होगी इस लाइन से, तो यही इन दोनों में डिफरेंस है। आप प्रिंट के साथ भी वो कर सकते हैं अगर नो आपने मैं लाइन ये स्किप कह कर रहा दी हूँ अगर इसको एम्प्टी छोड़ दें बगैर डबल कोटेशन के, तो फिर तो जैसी बात एरर ही आएगा मेरे ख्याल से। देख लें एरर आ गया, क्योंकि फंक्शंस के अंदर ना ये जो पैरेंथेसिस होती है इसमें हम आर्गुमेंट्स देते हैं। अब मेन फंक्शन में हम लोग आर्क्स दे सकते हैं, आर्क्स, क्योंकि वो एम्प्टी आर्गुमेंट होता है। इसी तरह हम लोग इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इस कोड लैब का सिर्फ यहीं तक है, तो हम लोग एक्सटेंड में चले जाते हैं। हम लोगों ने ये भी देख लिया है, हम लोगों ने डीलिंग विद एरर्स, अगेन इसमें इन लोगों ने कोटेशंस मार्क नहीं रखे थे तो उनका भी एरर आया था। तो दिस इज देयर सोल्यूशन कोड। उन लोगों ने हैप्पी बर्थडे वाला प्रोग्राम बनाया, इसी तरह हम लोगों ने वेलकम टू कोटलिन एंड एंड्रॉयड सीखो। समरी पढ़ लेते हैं इसकी। Kotlin Playground is an interactive code editor on the web where you can practice writing Kotlin apps. So this is an interactive code editor again. You can use this on your mobile devices, laptops, everywhere. And then we have all Kotlin programs need to have a main function. Again, fun is a keyword. You cannot use it inside here. Let's say I make a variable. तो Kotlin के अंदर हम लोग वेरिएबल बनाते हैं val के साथ। तो कोटलिन एक मॉडर्न लैंग्वेज है, इसमें हम लोगों को डाटा टाइप पहले इतने बताना पड़ता है कौन सा डाटा हम यूज़ करें। फॉर एग्जांपल इंट अगर मैं लिखूँ तो कुछ भी नहीं होगा इससे। सो सारे आप इस वेरिएबल से बना सकते हैं वैल से। तो अगर मैं अपने वेरिएबल का नाम रखना चाहता हूँ फंक्शन fun फन, तो अब ये भी ब्लू हो गया, मतलब ये भी एक कीवर्ड है। यू कैन नॉट यूज दिस टू मेक अनदर वेरिएबल। इसके लिए हम लोगों को छोड़ रखना पड़ेगा, जैसे वेरिएबल fun1, लेट्स कॉल दिस Kotlin is fun। और अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक और प्रिंट फंक्शन बनाऊँगा और हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पे fun1 को। अब इसमें हम लोग कोटेशंस नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन चुका है। तो कोटलिन की जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम है वेरिएबल का नेम जी, हम वेरिएबल का नेम var नहीं रख सकते? इसका नाम रख सकते हैं, ये वाल भी नहीं रख सकते हैं, वाल भी नहीं रख सकते हैं। दोनों ये मेरे ख्याल से वेरिएबल्स के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन जो वैल होता है इससे आपका डाटा टाइप ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है। इसको स्ट्रिंग असाइन हो गया अब, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। इसके टेक्स्ट जो होता है ना, टेक्स्ट वो हमेशा स्ट्रिंग ही होगा। और ऑब्वियसली अगर मैं इसमें नंबर ऐड कर देता हूँ तो ये भी स्ट्रिंग ही इसमें काउंट हो रही है, इसमें ये इंटीजर्स काउंट नहीं हो रही। अगर हमें इसको प्रिंट करके देखें
तो अब एक एरर आया क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का नाम नहीं रखा हम लोगों ने। हम इसको वेरिएबल का नाम दे देते हैं इस वेरिएबल का। तो अब अगर प्रिंट करें इसको, इस विल प्रिंट कोटलिन इज 1। सो दिस वाज एन एक्स्ट्रा पार्ट, ये इसमें नहीं था। समरी इसकी ये थी कि यूज द प्रिंट लाइन फंक्शन टू प्रिंट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, place text you want to print between double quotes, for example hello, again this is a string, quotation marks के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो string होगी। दोबारा हम लोग ने रिपीट किया, errors are marked red in the program, there is an error message in the output pane to help you figure out where the error is and what might be causing it। इसको भी एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। So let's say इसका नाम मैंने चेंज कर दिया, now this is going to give us an error। अब एरर यहाँ पे लिखा हुआ है अनरिजॉल्व्ड रेफरेंस, क्योंकि FUN यहाँ पे कहीं पे इनिशियलाइज ही नहीं हुआ है, तो इसलिए एक एरर आ रहा है। इसके ऊपर मैं अगर लेकर जाऊँ तो दोबारा वही एरर यहाँ पे भी बता रहा है कि ये वेरिएबल है ही नहीं हमारे पास। टू मेक दिस, और इसको एक एरर इस तरह भी आएगा अगर मैं इसको पहले कॉल करूँ, अब क्या होगा, ये रन होकर एरर आएगा। एरर आएगा क्योंकि कोटलिन जो है स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऊपर से शुरू रीड होती है, डायनामिक नहीं है जैसे C# है। तो हम लोग इसको दोबारा से ऊपर लेके जाते हैं, रन करते हैं, तो अब ये रन होकर है दोबारा। अगेन हम लोग लर्न मोर में जाते हैं। सो दीज आर सम लिंक्स, कोटलिन प्लेग्राउंड में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कोटलिन की। और ये इन लोगों ने वोकैबुलरी की लिंक दी हुई है जहाँ पे आप सारे कीवर्ड्स को देख सकते हैं, जैसे फन हो गया, वेल हो गया, जैसे अभी मेरे ख्याल से वो मैंने बताया था, वार हो गया। सो इसको हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं। वोकैबुलरी फॉर एंड्रॉयड बेसिक्स इन कोटलिन। इसी तरह एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो आगे हम लोग जब ऊप तक जाएंगे तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी पढ़ेंगे। इसी तरह ADB डिबगिंग के लिए यूज़ होता है, जब आप लोग एक ऐप बनाएंगे तो ओबियसली आप वो ऐप अपनी मोबाइल पे रन करना चाहेंगे, उसको डिबग करने के लिए एक एंड्रॉयड डिबग ब्रिज मिलता है। ये एक कमांड लाइन टूल होता है जिससे आप सारे एरर्स, जैसे अभी मेरी स्क्रिप्ट में एक एरर आया था, वो वाला एरर आपको जाहिर सी बात है ऐप में नज़र नहीं आएगा क्योंकि ऐप के ऊपर UI होता है। इसलिए हम लोग इस तरह के टूल्स यूज़ करते हैं जो एंड्रॉयड डेवलपर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। सो नाउ I have a task for you which is practice on your own। इसलिए मैंने कर दिया आप लोगों के लिए इसमें। तो इसमें ये लोग वही बता रहे हैं कि डू द फॉलोइंग चेंज द प्रिंट लाइन फंक्शन इंस्ट्रक्शंस टू प्रिंट, रन द प्रोग्राम, ये हो गया। अगेन यूज बैकस्लैश एंड इनसाइड द लाइन ब्रेक फॉर लाइन ब्रेक। तो प्रिंट ज़रूरी नहीं आप प्रिंट लाइन फंक्शन यूज़ करें, आप सिंपल प्रिंट भी यूज़ कर सकती हैं। तो हम लोगों का आपकी कोड लैब कॉन्ग्रेचुलेशन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग अब अगर इसको साइन करेंगे तो ये बैच आप लोगों को आपकी डेवलपर्स प्रोफाइल में आ जाएगा। अच्छा, कोटलिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये जावा बेस्ड है? जावा बेस्ड है, जावा की तरह है बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं। स्ट्रिंग के साथ फंक्शंस भी आगे होते हैं, जैसे अपर केस लोअर केस हो जाता है। इसमें ये है कि मॉडर्न लैंग्वेज है, बाकी सारी जो इससे पहले लैंग्वेज आई जैसे C++, C# होगी, पाइथन होगी, जावा होगी, उन सारों से इंस्पायर्ड ये इसका सिंटैक्स, क्योंकि मेन फंक्शन जो है ये C# में भी होता है, C++ में भी होता है, पाइथन में नहीं होता, लेकिन आप वो उसमें बना सकते हैं एक नेम वाला इफ स्टेटमेंट के साथ। और इसमें अगर आप सिंटैक्स की बात देखें तो ये प्रिंट लाइन जो है C# की तरह बिल्कुल, उसमें कंसोल डॉट रीड लाइन होता है, कंसोल डॉट राइट लाइन होता है। इसमें एक जो चीज़ नहीं है वो है सेमी कोलन्स, जो कि C++ और C स्टाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती हैं, पाइथन में वो नहीं होता। तो ये पाइथन की एक इसमें चीज़ आ गई है। तो ये अगर इसमें हम कोटलिन है। सेमी कॉलन डालें तो तभी मेरे ख्याल में इशू नहीं आता। इशू आता है, क्यों आता है? वो एक और एक्सपेक्ट कर रहे हैं फंक्शन 1 से आगे, जिसका एरर आया। ये देखें अब एरर नहीं आएगा क्योंकि, लेकिन इसका जो राइटिंग स्टाइल है ना प्रोग्राम कोटलिन का, ये सेमी कोलन्स पे इग्नोर करती है, क्योंकि हम लोगों ने इसको कॉन्साइज रखना होता है, एक्सप्रेसिव रखना होता है, इसीलिए जावा को रिप्लेस करने के लिए बनाई गई थी। और अभी भी ये कोटलिन जो है स्टैक ओवरफ्लो पे 4th रैंकिंग में जा रही है
जिसके हर वक्त क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरह के, मतलब डेवलपमेंट वाइज। और ऑब्वियसली कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फ्लटर भी है, डार्ट भी है, कोटलिन भी है, तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करें हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए। दैट कम्स टू पर्सनल प्रेफरेंस एक्चुअली। आप लोग फ्लटर से मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐप्स बना फ्लटर सकते और हैं। और कोटलिन में बेसिक डिफरेंस क्या आ जाता है? फ्लटर जो है वो एक यूआई फ्रेमवर्क है, उसमें आपको ये चीज़ें करनी नहीं पड़ती, उसमें आप डार्ट के साथ काम करते हैं जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। तो अब ऑब्वियसली डार्ट और फ्लटर जब आपस में काम करेंगे, उसका एक आपस में एपीआई होगा उसका अपना फ्लटर के लिए। अगर आप डार्ट को सिंटैक्स देखें, वो भी कुछ इससे काफ़ी मिलता है, जो मतलब जनरल डार्ट है। लेकिन अगर आप उसी डार्ट को फ्लटर में देखें तो उसमें आप वो वाली लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं, उसमें आप विजेट्स यूज़ करते हैं। क्लास होगी, उसके अंदर विजेट होगा, और फिर उस विजेट को आप चेंज करते रहेंगे। दो तरह के विजेट्स होती हैं, एक स्टेटलेस होते हैं, एक स्टेटफुल होता है। ऑब्वियसली वो हमारा टॉपिक नहीं है कोटलिन का, हम लोगों ने फोकस करना है इस पूरे इवेंट के अंदर, सेशन के अंदर। तो यस, अब हम लोग अगर कोई और क्वेश्चन हैं आपके तो आप पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन ये एक है कि जैसे हम जावा में कर सकते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट एंड्रॉयड स्टूडियो में, तो वो जो जावा का कोड होता है वो कॉटलिन में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। तो ये कॉटलिन ज़रूरी है सीखने के लिए? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि ये आपकी अपने ऊपर है, पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन इससे डेवलपमेंट काफ़ी प्रोडक्टिवली होती है। क्योंकि अगर हम लोग जब ऊप में जाएंगे ना इसमें, तो आपको जावा के अंदर और सी प्लस प्लस दूसरी जो लैंग्वेज है उसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। इसमें आप एक लाइन के अंदर ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं, बिल्कुल जैसे एक मैंने वेरिएबल बनाया, यहाँ पे पूरी क्लास बन सकती है। और जहाँ तक बात है कंपाइलेशन की, कोटलिन एक्चुअली कंपाइल करता है अपना कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि ऑब्वियसली वेब की लैंग्वेज है। तो इससे वेब एप्स बनती हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट में ही फोकस हो रहा है। और इसके काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस भी हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये ओपन सोर्स है ये भी। और ये जो है कोटलिन जेट ब्रांच से बनाई थी, जिसने पाइथन का जो आईडीई है पाई चार, उनके डेवलपर्स ने कोटलिन रिलीज़ की थी। उसके बाद गूगल ने इसको तब स्पॉन्सर किया था जब ये काफ़ी मशहूर हो रही थी डेवलपमेंट वाइज। तो इसका ये है, जावा में जावा इसका और जावा का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सेंटेक्स वाइज रिलेशन है, ऑब्वियसली मिलता है काफ़ी। ठीक हो गया। ओके, सो अब हम लोग अगले मौसम की तरफ चलते हैं। Okay, that was great, Talha. Mohsin, if you are in the meeting, please share your screen or create a birthday message kindly. आप दिखा दें. Yes, Talha. Am I audible? Okay. यस, Over to you, Mohsin. Just wait for the minute so I can share my screen. Sure, sure. In the meantime, अगर आप लोगों का कोई और question है, you guys can ask. हाँ, क्वेश्चन तो नहीं है आदि भाई, बस ये जो ग्रुप इसमें टेक्स्ट बॉक्स में ना लिंक्स आए हैं, ये मेन ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है? Okay, okay. मैं बाकी देख लें, आखिर में क्विज भी होना है, आप लोगों से क्विज करवाना है वो वाला, तो भी ग्रेट. अच्छा अच्छा हादी भाई, अभी जो है ये हमारे पास जितने भी यूनिट्स हैं कोटलिन के, तो ये इसमें लिखा ही है कि एंड्रॉयड बेसिक्स इन कोटलिन। तो Okay. ये यूनिट्स कंप्लीट करने के बाद हम कितना कुछ सीख पाएंगे मतलब? बेसिकली हुमैर जो हमारा करंट सेशन है वो सिर्फ बेसिक सिंटैक्स है, कोटलिन का बेसिक सिंटैक्स किस तरह लिखते हैं. वी आर ओनली कवरिंग द फर्स्ट चैप्टर हेयर. जो रेस्ट ऑफ द 4 चैप्टर्स हैं, मे बी वी कैन कोलैबोरेट विद IST अगेन, और हम उसके ऊपर दोबारा इवेंट्स रखवा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइम सिचुएशन, जितना भी हम कोलैबोरेट कर सकते हैं. जो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, मैंने अभी तक चैप्टर्स को देखा नहीं है एक्सेप्ट वन. सो आई Uh, पर्सनली सजेस्ट कि आप बाकी चैप्टर्स को देखो, कोई मुश्किल नहीं है, उसके ऊपर प्रॉपर उन्होंने गाइडेंस लिखी हुई है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस. अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन है, वी हैव मोशन हियर, वो आप लोगों को बता सके, आगे गाइड कर सकेगा एंड फर्दर ऑन. Also, Hadi, my another thing, screen is there are visible. नो, मोशन नो। नॉट नाउ.
Sorry, also another thing कि आपके जो Android Studio installation वगैरह है उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है. That's why we're recommending कि आप ये इस सेशन के बाद आप खुद ट्राई कर लें उसे, और उसमें कुछ एरर्स आएंगे, कुछ मसले आएंगे, वो सब फैसिलिटेट करके कंप्लीट कर लें, और फिर उसके बाद we can think about another session और बाकी करने के लिए. वरना we'll share the deadlines that you can complete at your own pace as well for the ones that are not interested in the meeting and they're interested in and they're self-learning. ये प्लेग्राउंड भी हम यूज नहीं कर सकते क्या, क्योंकि हमारा लैपटॉप इस पोजीशन में नहीं है कि एंड्रॉइड स्टूडियो कर सके। आज एंड्रॉइड स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर द नेक्स्ट पाथवेज की ज़रूरत होगी, वो प्लेग्राउंड में नहीं हो सकेगा बिकॉज इट्स एक्चुअल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और इस तरह की चीज़ें. Hadi, I am facing some issue while sharing screen. Kindly do let me know when you see my screen. Okay, Mohsen. You can rejoin the meeting. शायद rejoin करने से maybe आपकी screen share हो जाए. कभी कोई issue आ जाता है. या मैं ट्राई कर रहा हूँ. आई गेस वो कुछ लाइक आई वाज ऑन मैकबुक, तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से कोई एक्सेस इशू आ रहा है. मुझे चेक करना. Okay, okay. So take your time. आदि मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि आई एम इन माय यूनिट 2, तो मैं पूछ ये रहा था कि जब हम सारे यूनिट्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम कितना कुछ सीख पाएंगे. Personally, Humair, actually, this is also my first time Kotlin का, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि आप लोग कितना सीख सकोगे, लेकिन आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप लोग एक ऐप बना सकते हो, जो कि आपने अगर इंट्रो के शुरू में देखा हो, बर्थडे विशिंग ऐप थी, एंड द अदर वन वाज कि जो Dice app डाइस थी. यस डाइस डाइस. रोलर. तो बेसिकली दीज ऐप्स, इसके अंदर आपको प्रॉपर यूआई बनाना आ जाएगा, एटलीस्ट आपको बटन्स लगाना आ जाएंगे, बटन की फंक्शनैलिटी किस तरह चलती है, HTTP रिक्वेस्ट किस तरह भेजते हैं, वो सब कुछ आ जाएगा. और आपको इतना एटलीस्ट आ जाएगा कि अगर आप कोटलिन के अंदर इंटर्नशिप करने का फर्दर इन फ्यूचर रखते हो माइंड अपना, सो आई एम वेरी श्योर कि अगर आपका मतलब सीखने वाला रुझान है, तो यू गाइस कैन इजीली टेक एन इंटर्नशिप. आदिल भाई, ये इसकी इस कोर्स की सर्टिफिकेशन भी है या बस ऐसी? इस कोर्स में नबील एक्चुअली आपको बैजेस मिलेंगे, और बैजेस जो हैं वो आपकी गूगल डेवलपर, जैसे कि मैंने क्लाउड सीखो में आपको बताया था कि एक्चुअली होता है ऐसे है कि आपको सबसे पहले ना गूगल डेवलपर का एक अकाउंट बनाना पड़ता है. इट्स लाइक डेवलपर अकाउंट जिसके अंदर आपके बैजेस आते हैं. लेट सपोज कि आपने क्लाउड सीखो का एक चैप्टर पास कर लिया है, तो इस एक चैप्टर का बैज आपके उस अकाउंट के ऊपर आ जाएगा कि यार यू हैव अर्न और पास दिस टेस्ट. इसी तरह बेसिकली जब आप 5 टेस्ट क्लियर कर लोगे, उसके बाद एक बेनिफिट ये है कि बैजेस तो आपको मिलेंगे, साथ साथ आपको स्वैग्स भी मिलेंगे. स्वैग इस लाइक कि आपको एक गूगल की तरफ से टी शर्ट मिल जाएगी, सम स्टिकर्स, मग्स, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी. सो उन सब तक पहुंचने के लिए आपको 5 चैप्टर्स क्लियर करने हैं. हर चैप्टर के अंदर एक एक क्विज है एट द एंड, तो वो सारी चीज़ें आपको पास करनी पड़ेंगी. और आदि भाई अगर ये जैसे अकाउंट कि बनेगा डेवलपर का, तो ये हम क्लाउड सीखो भी हम कोर्स सीख सकते हैं? एग्जैक्टली आप सीख सकते हो क्लाउड सीखो. मैंने चैट में लिंक सेंड किए हैं, मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ इन केस के अगर वो ऊपर चले गए हों. आदि भाई जैसे कि मैं अभी एंड्रॉइड सीखो के यूनिट 2 में हूँ, यानी चैप्टर 2 में हूँ, तो ये जो डाइस रोलर वाली ऐप है और बर्थडे विश वाली ऐप है, ये तो मैं पहले ही डेवलप कर चुका हूँ. तो इसका मतलब ओके. है कि जो नेक्स्ट यूनिट हैं उनमें हम मज़ीद जो है कम्प्लेक्स ऐप डेवलप करेंगे, आई थिंक सो. तो इसका ये है कि अगर हम ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो एंड पे जाके हमारे पास अगर कोई किसी ऐप का आइडिया है, जैसे कि हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो में पहले से लेआउट या टेम्पलेट्स होते हैं ऐप्स के, तो कोई आइडिया है तो हम उस आइडिया पे काम कर सकते हैं, यानी ऐप्स डेवलप कर सकते हैं. श्योर उमर. देखो यार, कोई भी जब आप कोई चीज़ डेवलप करते हैं ना, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम डेवलपिंग दैट थिंग. आप मेरे पास आओ, उस्मान के पास आओ, हम आपके टेक्निकल लीड हैं, आप हमारे पास आओ, अपना आइडिया शेयर करो, वी कैन विल वर्क ऑन दैट. और कोई ऐसी चीज़ और ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे ना सिर्फ आपको बल्कि जो भी हमारी साथ ओपन सोर्स कम्युनिटी है उसको भी फ़ायदा पहुँचे. तो इट बी अ डबल बेनिफिट फॉर यू एज वेल. आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा एंड साथ साथ कम्युनिटी को गिव बैक भी हो जाएगा.
यस, मैं आपकी टेक्निकल टीम में भी हूँ एंड मेरे पास आइडिया ये है कि हमारे पास जो क्रीम और ऊबर वगैरह की जो सर्विसेज चलती हैं, तो ये आपने देखा होगा कि ये गांव वगैरह में नहीं चलती ना। तो हम मेरा आइडिया ये है कि मैं अपने इलाके के लिए ऐसी ऐप को डेवलप करूँ जिसमें मतलब अपने इलाके के लिए वो सारा काम हो। ओके, सही है। वी कैन वर्क ऑन दैट हुमैर। एक्चुअली मुझे कोटलिन की इतनी आई एम एक्सपर्टीज नहीं है, बट मोशन इज हेयर आई फॉर एम अस। वर्किंग ऑन दैट। ओके आई ओके एम वर्किंग ऑन दैट, दैट्स व्हाई आई एम हियर। ओके, सो यू आर वर्किंग ऑन। Hadi, We'll just, okay, Mohsin, kindly please give me a second. Humair, we will discuss this after the meeting, okay? So we will just move the control to Mohsin. Over to you, Mohsin. Hadi, screen share हो रही है? Kindly आप मुझे Yes, yes, बताएंगे? your screen is visible. Okay, thank you. Hi everyone. So जैसा कि तलहा ने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि कोटलिन पे वर्क कैसे करना है और लाइक हमने स्टार्ट किस तरह करना है. So I am adding something more. सो जैसा कि है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी लैंग्वेज में जब स्टार्ट करते हैं तो कंपाइलर सबसे पहले आपके मेन फंक्शन से रीड करता है. सो कंपाइलर जिस तरह ही उसको आपकी इंस्ट्रक्शन मिलती है तो उसने कन्वर्ट करना होता है हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू लो लेवल लैंग्वेज कोड. सो जो आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मेन फंक्शन में प्रोवाइड करते हैं वो उसके मुताबिक वर्क करता है लाइन बाय लाइन. सो लाइक दिस कि जिस तरह फन फन इज़ लाइक अ कीवर्ड. एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ भी हो सकता है, जिस तरह हम वॉइड यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, सी सी प्लस प्लस और पाइथन में डेफ यूज़ करते हैं. इसी तरह यहाँ पे फन है लाइक एक कीवर्ड है, आप इसको और कहीं यूज़ नहीं कर सकते लैंग्वेज में. सो दिस इज़ बेसिक के आप मेन फंक्शन में कैसे सिंपल प्रिंट लाइन जो कि तलहा ने आपको बता दी है कैसे आप कर सकते हैं. प्रिंट आप यूज़ कर सकते हैं या प्रिंट लाइन यूज़ कर सकते हैं. सो अगर मैं बात करूँ कि लाइक दिस इज़ अ pretty common basic assignment type, or you can say anything. Add a birthday cake. So you can add symbols, etc., and anything like that. So we will perform something to ensure कि ये चीज़ वर्क कर रही है. आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बीच में. मैं साथ साथ आपको गाइड करता रहूँगा. अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि आप कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं. दिस इज़ लाइक अ कमेंट. ये जो दो लाइंस लिखी हैं, दिस इज़ कमेंट लाइन एंड दिस इज़ अनदर कमेंट. सो कमेंट लाइन यूज़ क्यों की जाती है. कमेंट लाइन यूज़ की जाती है कि आप कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा सकें. सो कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाने का मकसद क्या होता है. फॉर एग्जांपल कि अगर आप अपने लिए कोड लिख रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोड लिख रहे हैं, तो लेट्स से कि अगर आप खुद भी अपना कभी चेक कर लीजिएगा कि आप लेट्स से एक असाइनमेंट लिखते हैं और 1 वीक बाद आप उसे दोबारा चेक करते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगी, यार मैंने इस असाइनमेंट में यहाँ पे क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट की थी या मैंने इसमें क्या ऐसी चीज़ यूज़ की थी. तो उसको अगर लेट्स से आप कमेंट कर देते हैं कि लाइक आई यूज़ दिस थिंग और मैंने ये चीज़ यूज़ की है या कुछ आप ऐड कर देते हैं, तो जब भी आप बेशक साल बाद भी आप जाके अपने कोड को रीचेक करेंगे, तो एक तो आपके लिए बहुत ईज़ी होगा उसको समझना, उसको रीड करना, या आप किसी और को अगर समझाना चाह रहे हैं आपके लिए, उसके लिए भी बहुत ईज़ी होगा. और जब आप लार्ज स्केल एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, तो वहाँ पे रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हम इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते, बट स्टिल यहाँ पे आप जब प्रैक्टिकल वर्क में जाएँगे, तो आपको पता लगेगा कि रीडेबिलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट. सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा रन करके दिखा देता हूँ कि अगर लेट्स से कि मैं ये केक प्रिंट करना चाह रहा हूँ. सो लाइक सिंपल है कि आप यहाँ पे कुछ भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं. लाइक दिस इज़ सम कैंडल्स और उसके ऊपर फ्लेम है. तो ये आप कुछ भी प्रिंट करना चाहें तो सिंपल बेसिक प्रिंट कर सकते हैं एज़ तलहा आपने आपको जो बताया था. सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड कि अब सेकंड ये है कि क्रिएट एंड यूज़ वेरिएबल्स. सो वेरिएबल्स क्या हैं? सो वेरिएबल्स इज़ लाइक अ बॉक्स के जिसके अंदर आप कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स के बॉक्स होते हैं. लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक बॉक्स है, मैंने इसमें ये चीज़ रखनी है, ये चीज़ रखनी है, ये चीज़. सो सिंपल इज़ दैट. अच्छा, ये चीज़ है कि वॉल क्या चीज़ है? अब वॉल एक स्पेशल कीवर्ड है कि आप उसको क्यों यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ ताकि आपको क्लियरली एग्ज़ाम्पल समझ लग जाए. लेट्स से आई हैव वेरिएबल नेम वॉल और उसमें मैं एक इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ. दिस इज़ लाइक मैंने एक कीवर्ड नेम ले लिया और एक मैंने वेरिएबल नेम ले लिया जिसका नाम है और मैं उसमें 5 वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ. सो दिस विल वर्क फाइन. मैं यहाँ पे ए को प्रिंट करूँगा तो दैट इज़ गुड. यहाँ पे आपको 5 शो हो रहा है कंसोल पे.
लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि हम वार क्यों नहीं यूज़ करें या वॉल क्यों नहीं यूज़ करें, अब मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि वॉल है, वॉल यूज़ होता है कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल आपको अगर आपने किसी दूसरी लैंग्वेज में पढ़ा होगा सी या सी प्लस प्लस में, तो वहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ होता है कॉन्स्ट। सो उसका मतलब ये होता है कि आप जो वर्क कर रहे हैं, आपने जो वैल्यू स्टोर किया, आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं ए में एक ऐड करना चाह रहा हूँ, ए में एक में लेट्स से मैं एक ऐड करना चाह रहा हूँ। अब मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ, तो यू कैन सी कि वो मुझे कह रहा है वॉल कैन नॉट बी रीअसाइंड। मैं इसको रीअसाइन नहीं कर सकता क्योंकि ये कांस्टेंट है। वॉल एज अ कांस्टेंट काम करेगा, वो दोबारा अपने आप को रीअसाइन नहीं कर सकता। दिस इज अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बात करूँ कि एक बॉक्स है और उसके ऊपर लॉक है, ठीक है, तो आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ओपन करके मॉडिफाई नहीं कर सकते जो उसके अंदर चीज़ पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आपके लिए अगर आप इस तरह का कुछ काम करना है कि आप कहते हैं कि मैं प्रोग्राम के अंदर अपनी वैल्यू नहीं चेंज करना चाहता, तो वेल कीवर्ड जो है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। अदर देन दैट कि अगर मैं कहता हूँ कि वॉल अगर आपने चेंज करना है तो फिर आप वार यूज़ कर सकते हैं। अब वार यूज़ करेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू a प्लस वन। सो आप जब यहाँ पे आप इंटरलन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो एरर नहीं देगा। आपको एक एडिशन करके उसने मॉडिफाई करके आपको वैल्यू दे दी। फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू जो थी वो 5 थी एंड देन उसने चेंज करके 6 कर दी। तो ये मेरा वॉल और वार का डिफरेंस था कि मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ। सो असाइनमेंट के बारे में आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि आप कैसे असाइन उसे कर सकते हैं, वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि स्ट्रिंग्स के साथ कैसे वर्क करना है। तो दैट इज़ प्रीटी कॉमन के लेट्स से कि मैं कहता हूँ ये है or the value I am just printing on the console, इसका यही है println। so the value of a is, अब मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि a की वैल्यू क्या है। so mostly प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम क्या करते हैं कि हम जस्ट इस तरह कर देते हैं। so हम कहते हैं कि कॉमा लगा के हम आगे अपनी a की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। so यहाँ पे क्या होता है कि वो कहेगा यहाँ पे, क्योंकि प्रिंट एलन है तो एक कोटलिन में आपके इस तरह वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे स्पेशल आप एक चीज़ यूज़ करते हो जिसको आप कहते हो कि डॉलर साइन लगा के, और आप ब्रैकेट के अंदर जो आपकी वेरिएबल की वैल्यू है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेट से अब मैं अगर ये यूज़ करता हूँ एंड देन मैं इसको सेमी कॉलन के अंदर कॉलन के अंदर कर देता हूँ, तो आप देखिएगा मुझे वैल्यू शो करेगा द वैल्यू ऑफ ए इज़ 6। तो आप एनीथिंग, आप कुछ भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेट से आप कुछ एज यूज़ कर रहे हैं या कोई भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, आप उसका नाम लिख सकते हैं। लेट से मैं कहता हूँ कि दिस इज़ माय नेम, नेम इज़ मोहसिन, एंड यहाँ पे आप क्या कर लेंगे कि माय नेम इज़, और सिंपली आप यहाँ पे डॉलर साइन लगाएंगे। दिस इज़ लाइक बेसिक जावास्क्रिप्ट, अगर आपने कभी उसको थोड़ा बहुत देखा हो तो जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे ही होता है। सो माय नेम इज़ मोहसिन, तो ये ऐसे आपको प्रिंट कर देगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। एज ए स्ट्रिंग में आप कंसोल पे कुछ प्रिंट करा रहे हैं तो आप उस पर अपने वेरिएबल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकें और इजीली वर्क कर सकें। सो इन मीन सॉरी आई एम टाइम अगर आपको इंटरप्टिंग, लेकिन वो कोटलिन प्लेग्राउंड हमें नजर नहीं आ रहा। इट्स जस्ट द आर्टिकल दैट इज विजिबल। लेट मी चेक, किसी ने मुझे सो क्रोम टैब, सो कैन यू मुझे बताइएगा अगर आपको अभी शो हो रहा है कोटलिन प्लेग्राउंड? अभी तक कैन नहीं यू सी हुआ। इट? लेट मी चेक। Can you see it right now? It's loading. I think it'll be visible now. Yep, it's visible. सो आई गेस किसी ने मुझे बताया नहीं और मैं एक्सप्लेन करता रहा कोटलिन प्लेग्राउंड में। खैर इट्स ओके, वी विल अगेन एक्सप्लेन इट। सो ये है कि थोड़ा आई गेस स्क्रीन शेयरिंग का इशू है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो मैं ये कह रहा था कि वॉल और वार में क्या डिफरेंस है। सो वॉल इज़ लाइक कि आप उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो एज अ कांस्टेंट वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा था कि वॉल, लेट्स से कि मेरे पास एक वेरिएबल है A और उसमें मैं कुछ नंबर इंटीजर स्टोर करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं लेट से कुछ प्रिंट कर देता हूँ A, सो दिस विल प्रिंट फाइन। बट अगर मैं इसमें कहता हूँ कि कुछ चेंजिंग्स मुझे चाहिए, लेट से मैं कहता हूँ A में मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, एक एडिशन करना चाह रहा हूँ,
सो ये एडिशन के बाद आपका प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि वो एज अ कॉन्स्टेंट वर्क करता है। एज आई डिस्क्राइब के इट्स लाइक अ बॉक्स विद अ लॉक। सो आप यहाँ पे देखेंगे वो कहेगा वाल कैन नॉट बी रीअसाइंड, आप इसको रीअसाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक कांस्टेंट एज अ वर्क करता है। सो अगर आपने इसको इस तरह वर्क करवाना है, अगर आपने इसको चेक करना है तो आप क्या करते हैं, वॉर कीवर्ड यूज करते हैं। वॉर कीवर्ड चेंजेबल हो सकता है, एस लाइक यू कैन सी के 5 से 6 हो गया। इफ एनीवन हैज क्वेश्चन कैन काइंडली आस्क। मैंने कहा है कि अगर हम इसको ए प्लस प्लस लिखें तब तो ये इंक्रीमेंट होगा। यस इट्स टोटली फाइन, इट्स अप टू यू, इट्स राइटिंग स्टाइल। ये किसी भी लैंग्वेज में वर्क करता है, आई होप सो इट में वर्क करेगा, या इट विल वर्क। सो के आप ए प्लस प्लस कर सकते हैं, इट्स प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, यू विल लर्न अबाउट इट। इतना कोई इसमें वो बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको स्टिल कर सकते हैं जिस तरह आप करना चाहिए, बट प्रेफरेबल वे यही होता है कि आप एक अच्छे तरीके से कर सकें असाइन, ताकि दूसरे को इजीली समझ लग सके। तो दैट वाई मैं आपको इस तरह करके बता रहा हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने वॉल कीवर्ड यूज़ किया जिसकी वजह से ये चेंजेबल हो सकता है, बाद में इसमें मॉडिफिकेशन आ सकती है, लेकिन अगर वॉल कीवर्ड यूज़ करेंगे तो आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो इसके रिगार्डिंग अगर किसी का क्वेश्चन है तो बताएं, तो फिर मैं आगे स्ट्रिंग पे मूव कर लेता हूँ। सो द थिंग इज़ के लाइक अगर मैं अब एज डिफाइन कर देता हूँ, लेट से 15। सो अगर मैंने इसको कंसोल पे प्रिंट करवाना है एज के साथ के लाइक माई एज इज दिस, सो मैं इसको कैसे करवा सकता हूँ, प्रिंट एल एन एंड माई एज इज, यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर रहा था कि लाइक सिंपल जावास्क्रिप्ट लाइक सिंटेक्स है कि आप डॉलर साइन यूज़ कर लें एंड देन कर्ली ब्रेसेस में आप जस्ट ये लिखते हैं कि एज। सो दिस विल प्रिंट आपका एज वेरिएबल, जो कि आप इजीली यहाँ पे कंसोल पे आउटपुट कर सकते हैं। आप इसको रन करके देख लें। सो माई एज इज 15, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं कि वार्ड नेम इज इक्वल टू मोहसिन, एंड सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे वही काम करेंगे कि माई नेम इज मोहसिन, सॉरी नेम। सो ये भी आपका प्रिंट करेगा कंसोल पे। सो आप इस तरह वेरिएबल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी यूज़फुल कब होते हैं, जब लाइक आप फॉर एग्जांपल रेजिक्स वगैरह में वर्क कर रहे होते हैं, उन चीज़ों में वर्क कर रहे होते हैं, स्ट्रिंग्स फाइंडिंग कर रहे होते हैं, आप कुछ कहते हैं कि मैंने कुछ बड़ा प्रिंट करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे आप कहते हैं कि मैं इस तरह स्ट्रिंग में यूज़ कर सकूँ, मेरे लिए आसानी हो कि मैं वेरिएबल्स को कंसोल पे इस तरह आउटपुट करवा सकूँ। सो दैट इज़ प्रेटी बेसिक्स। अगर आप आगे चलते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि जिस तरह इनके प्लेग्राउंड में है, कोटिंग प्लेग्राउंड में, तो मैं आपको यहाँ पे लाइक हैप्पी बर्थडे मैसेज आप किसी तरह भी अपने फन वे में प्रिंट करके दे सकते हैं कि लाइक अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू के साइन है, थोड़ा डिज़ाइन बनाने के लिए आप इसको कुछ और भी बना सकते हैं। सो दैट इज़ प्रेटी बेसिक स्टफ कि आप जिस तरह मर्जी मॉडिफाई कर सकते हैं। सो ये आप पे डिपेंड है। तो आप जब प्लेग्राउंड पे खेलेंगे, आप खुद मतलब वर्क करना शुरू करेंगे, तो आप डिफरेंट थिंग्स करेंगे, डिफरेंट पैटर्न्स बनाएंगे, तो आपको लाइक समझ लगना शुरू हो जाएगी कि क्या क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं। खैर मूविंग फॉरवर्ड, सो अगर मैं मूव फॉरवर्ड करता हूँ तो मैं रेपिटिशंस पे जाऊँगा। अगर आपने कभी किसी दूसरी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत रीड किया हो तो हम कहते हैं कि लूप्स लगाना, किसी चीज़ को रिपीट करना। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक टास्क है प्रिंट करने का। सो अगर मेरे पास एक टास्क है प्रिंट करने का, तो मैं इसको 10 दफ़ा लिखूंगा, 20 दफ़ा लिखूंगा या 50 टाइम्स लिखूंगा, बट मैं इसको 100 टाइम्स नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये मेरी एफिशिएंसी के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि मैं इसे 100 टाइम्स लिखूँ या इवन 1000 टाइम लिखूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में लूप्स हैं, इसमें सिंपल आप ये होता है कि आप रिपीट यूज़ कर लेते हैं और उसमें आप अपनी रेपिटेशन बताते हैं कि आप जो उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके अंदर लिखना चाह रहे हैं वो कितनी दफ़ा आप रिपीट करेंगे। सो आई गेस मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 टाइम्स करना चाह रहा हूँ और मैं कर्ली पैरेंथेसिस लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी प्रिंट कर देता हूँ कि प्रिंट एलन मोहसिन। सो अब क्या होगा कि फर्स्ट टाइम रेपिटेशन होगी 1, उसने प्रिंट करवाएगा 1, सेकेंड टाइम होगी दोबारा रेपिटेशन हो जाएगी, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे आप जब चेक करेंगे तो ये 2 दफ़ा उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो आप मतलब यहाँ पे अब इवन के मैं कहता हूँ मैं 200 टाइम्स करना है, तो मुझे 200 टाइम्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रिंट एलन, मैं जस्ट यहाँ पे अपनी वैल्यू चेंज कर दूंगा कि मैंने कितने टाइम दफ़ा रिपीट करना है, तो मुझे रिपीट करके दिखा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मे बी कंसोल पे इतना चीज़ें शो ना हो, बट स्टिल यू कैन सी के ये 200 पूरे आपको करेक्टर्स जो लेटर है वो शो कर रहा है आपको।
सो यहाँ पे आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ और दे देता हूँ कि जिस तरह मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने एक वार कीवर्ड यूज़ कर लिया और मैं उस पर कह रहा हूँ कि एज इज इक्वल टू 5। अब ये क्या कर रहा है, एज अभी मैंने 5 यहाँ पे अपने वेरिएबल में दी है, लेकिन मैं रेपिटेशन में अपना वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि एज प्लस 2 तक चले, लाइक एज प्लस 7 तक चले। मतलब एज प्लस 5 है तो 5 प्लस 2 7। तो या आप जब आप इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि 7 टाइम आपको इज इक्वल टू प्रिंट करेगा। आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सो इसने 7 टाइम प्रिंट कर दी। आप इसमें डिफरेंट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जिसमें अगर मैं खाली एज करूँ तो ये तब भी आपको 5 टाइम प्रिंट कर देगा, क्योंकि मैंने अपने वेरिएबल की इतनी रखी हुई है लिमिट। सो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि आप रेपिटेशन में हमेशा वो चीज़ रखेंगे उसके सिंटेक्स में जो आपने रिपीट कितने टाइम करना है, मतलब उसका काउंटर कितना चलना चाहिए। आप इसमें स्ट्रिंग वैल्यूज लाइक नहीं पुट कर सकते, क्योंकि आपको एरर देगा। सो यू कैन सी कि ये आपको एरर देगा, क्योंकि इंटीजर एक्सपेक्टेड है। क्योंकि काउंट अब हमेशा जो काउंटर चल रहा है वो आपसे काउंट एक्सपेक्ट करेगा कि कितनी दफ़ा काउंट होना चाहिए। ठीक है, लेट्स से कि मैं इसको ज़ीरो भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आपने बताना है कि कितने, एम्प्टी नहीं छोड़ सकता क्योंकि आपने बताना है कि कितने टाइम्स आपने प्रिंट करना चाह रहे हैं। सो ये सिंपल बेसिक्स लूप्स का था। आप जब अपना चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं थोड़ा सा एक कोड आपको रन करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाए फंक्शंस के बारे में क्या है। सो दिस इज लाइक अ मेन फंक्शन। इसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं, एज एंड लेयर्स। सो ये जो एज है ये भी हमारा कांस्टेंट है एंड लेयर्स भी कांस्टेंट है। दिस इज अ फंक्शन। सो जिस तरह के हम दूसरी लैंग्वेजेस में देखते हैं, सिंपल ऐसे ही फंक्शन है, प्रिंट केक कैंडल्स, और उसमें एक मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ विच इज माई वेरिएबल एज। सो मैं इसमें एज पास कर रहा हूँ। सो जब आप फंक्शन लिखते हैं तो आप कहते हैं प्रिंट केक कैंडल्स, जो यहाँ पे मेरा फंक्शन था, और आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है जो आप पैरामीटर दे रहे हैं वो किस टाइप का है। सो दिस इज लाइक आई एन टी इज लाइक कीवर्ड। सो यहाँ पे देखेंगे आप आई एन टी जब मैं लिखता हूँ तो ये एक कीवर्ड है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं उसे डिफाइन कर रहा हूँ कि जो मेरा एज वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आप फंक्शन में क्या काम कर रहे हैं, ये आपका मेन फंक्शन है, आपका कंपाइलर यहाँ से रीड करना शुरू करेगा। तो जैसे ही वो वैल पे आएगा उसको एक वेरिएबल असाइन हो जाएगा, लेयर्स पे आएगा नेक्स्ट वेरिएबल असाइन हो गया, उसके बाद एक फंक्शन आया। अब यहाँ पे जैसे ही फंक्शन आया तो दिस इज लाइक फंक्शन कॉल। अब ये फंक्शन के पास चला गया यहाँ पे। अब ये नए फंक्शन के पास जैसे ही गया उसने देखा कि यार यहाँ पे क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। तो दिस लाइक सिंपल एम्प्टी स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं हम। उसके बाद रिपीट हो रहा है, जो अभी मैंने आपको समझाया था कि रिपीट क्या करना है, क्यों करना है। तो रिपीट हम क्या कर रहे हैं, एज तक, एज है 24, और प्रिंट क्या करना है हमने, जस्ट कॉमा। तो दिस इज लाइक प्रिंटिंग 24 टाइम कॉमा, सिंपल। एंड दिस इज लाइक हम उसके बाद एक एम्प्टी लाइन प्रिंट करना चाह रहे हैं। उसके बाद अगेन हम मैं एक सिंपल थोड़ी सी स्पेस देना चाह रहा हूँ। उसके बाद दोबारा मैं एक केक की शेप बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो जैसे लाइक केक की कैंडल्स बन जाएंगी, जिस तरह आपको मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा। इसको थोड़ा डेमो भी कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आइडिया हो जाए। सो दिस इज लाइक कि ये मैंने 24 टाइम्स मैंने कॉमा प्रिंट किया, और उसके बाद टाइम मैंने स्पेस दी, नेक्स्ट लाइन में आया और मैंने ये आपकी कैंडल्स प्रिंट कर दी है। जो ये आपकी कैंडल्स आ रही थी, ये आप साइन यूज़ कर लें, जो मर्जी कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। सो ये हो गया। अब ये केक के ऊपर वाला पार्ट हो गया। अब उसके बाद आप कहते हैं कि प्रिंट के टॉप, आप उसका टॉप प्रिंट करना चाहते हैं कि उसका अपर पार्ट क्या है। तो मैंने इसी तरह एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने पैरामीटर पास किया सेम एज वाला। अब एज वाला मैंने पैरामीटर पास किया, और इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि एज प्लस 2 टाइम, एज 24 थी तो 24 प्लस 2 26 टाइम प्रिंट करना चाहिए इज इक्वल टू। सो आप देख सकते हैं कि वो 26 टाइम इज इक्वल टू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज प्रीटी बेसिक। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो साथ आप पूछ सकते हैं मेरे से। भाई ये जो आपने फंक्शन बनाया है प्रिंट केक बॉटम, और इसमें रिपीट लेयर्स के जी अंदर एक और लूप है, वो थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी मैं उस पे जा रहा हूँ। मैंने अभी आपको वो डिफाइन ही नहीं किया, बताया नहीं है, मैं सिर्फ अभी ऊपर तक था, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। सो जो नेक्स्ट फंक्शन है वो मैंने क्या बताया कि प्रिंट केक बॉटम है। अब इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, ऊपर जो मैं फंक्शन बनाए थे उसमें मैं सिंगल पैरामीटर पास कर रहा था लाइक एज। यहाँ पे मैं एक लेयर्स का पैरामीटर भी पास कर रहा हूँ। सो यहाँ पे लेयर्स 5 हैं और एज मेरे पास 24 है। 24 यहाँ पे इनपुट हो गया, और लाइक ए लेयर्स में 5 चला गया। अब मैं बता देता हूँ। अब एज था, इस ये भी इंटीजर टाइप था, आपने डिफाइन कर दिया। लेयर्स जो थी वो अभी आपकी इंटीजर टाइप थी, आपने डिफाइन कर दिया। सो एज क्या, लेट्स से पहली दफ़ा आपका रेपिटेशन क्या हुई है,
मैं कहता हूँ आप एक दफ़ा रिपीट क्या करना चाह रहे हैं, लेयर्स, लेकिन उसके अंदर भी आप चाहते हैं कि वो एक और नई चीज़ भी रिपीट होना शुरू हो जाए। ठीक है, अगर मैं आपको एक बेसिक चीज़ में अगर मैं आपको बताऊँ तो एक थोड़ा-सा आपको मैं डेमो बता देता हूँ, ताकि आपको इज़िली समझ लग जाए। पहले लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं ऐज की वैल्यू भी 1 कर देता हूँ और लेयर की वैल्यू भी 1 कर देता हूँ। ठीक है? सो अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखेंगे आपको क्या रिज़ल्ट आता है। ये सिर्फ़ आपको जो लास्ट चीज़ है ना, सिर्फ़ आपको ये चीज़ शो हो रही है क्योंकि एक ही लेयर है और एक ही आपके पास ऐज है। ठीक है? अगर मैं इसमें से एक की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देता हूँ ऐज की, आप चेंजेज़ आपको समझ लगना शुरू हो जाएँगी। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे आप देखेंगे तो उसने ऐज मैंने 2 की तो उसने इस तरफ आपके हॉरिजॉन्टल साइड पे स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अब लेयर्स क्या है कि केक की एक लेयर है, जैसे आप बेसिक केक में देखते हैं कि एक लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है। तो जैसे मैं इसकी लेयर्स इंक्रीज करूँगा तो आप देखेंगे कि ये वर्टिकल वे में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, जितनी लेयर्स थी, 2 लेयर्स थी और 2 ही आपके एज थे। तो उस हर लेयर में वो 2 एज के एक आपके प्रिंट करी जा रहे हैं। ठीक है? तो अगर मैं इसको सिंपल जो कि आपका प्रोग्राम था, उसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो आप वो देख लेंगे कि लेयर्स के वेरिएबल में 5 थी, 5 लेयर्स थी, 1, 2, 3, 4, 5 और हर लेयर में 26 टाइम ये प्रिंट कर रहा है एट द रेट साइन, क्योंकि 24 आपकी एज की वैल्यू थी और 2 ऐड कर रहे हैं आप। अगर आप इसको कम कर लेते हैं तो आपका केक थोड़ा-सा छोटा हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, लाइक वो थोड़ा-सा कन्वीनियंस के लिए प्रिंट किया ताकि इट लुक गुड। ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो ये देखें, हर लाइन में 1 लेयर आई, फर्स्ट लेयर में उसने 26 टाइम आपका प्रिंट कर दिया। ये जैसे अब आपको इसकी वर्किंग बता दूँ कि कैसे है। लेयर में आपने एक इंटीजर डाला 5, अब रिपीट 5 होगा, ये कंडीशन नीचे आई। रिपीट एज प्लस 2, एज 24 है, 24 प्लस 2 क्या है? 26। अब ये जब फर्स्ट टाइम हमारी वैल्यू आई है तो ये 26 टाइम इस लाइन में प्रिंट करेगा। जब इसने 26 टाइम ये वाला रेपिटेशन लूप चल गया, अब ये खत्म हुआ, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन की स्पेस आ गई। यहाँ पे प्रिंट एलन क्या कर रहा है? नेक्स्ट लाइन में लेके जा रहा है। अब लेट्स से एक दफ़ा रिपीट कंप्लीट हो गया क्योंकि 5 लेयर्स थी। सेकंड लेयर की बारी आ गई। सेकंड लेयर में फिर क्या आया? सेकंड लेयर जैसे इंटर हुए, उसने क्या किया? उसने कहा एक और रिपीट का लूप है जिसके अंदर आपने 26 टाइम प्रिंट करना है, 26 टाइम। अगेन उसने वही काम किया। फिर उसने प्रिंट लाइन की न्यू और आप इस तरह करते-करते आ सकते हैं। आप इसको जितनी मर्ज़ी लेयर्स इंक्रीज़ कर लें, आप केक को बड़ा बनाते जाएँ, जो मर्ज़ी करते जाएँ। दैट्स अपॉन यू कि आप इसको कैसे प्ले करते हैं। आपको ये लूप्स वगैरह इनमें वर्क करना सीखें क्योंकि ये जो हैं आगे आगे काफ़ी काम आएँगे। ये बेसिक आई गेस चीज़ें थी। इसके अलावा तो आई गेस ऐसी कोई समरी नहीं है। मैं आपको मुझे काइंडली आप कोई बता सकते हैं कि समरी वाला पेज शो हो रहा है आपको कि नहीं? नो, नहीं, ये आपकी अभी तक स्क्रीन में। प्लेग्राउंड शो हो रहा है? जी प्लेग्राउंड यस। है। लेट मी चेंज। अब मुझे बताएं, समरी आपको शो हो रही है? नो, आप स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही। नहीं, स्क्रीन स्क्रीन हो शेयर रही हो है, रही यस, है जब लेकिन आपकी शो हो शायद रही है। अब नजर आ रहा है। ठीक है। ये मैंने आपको लाइक बेसिक चीज़ें सारी बता दी। आप यहाँ से कोड खुद भी आप इसके मॉडिफाई करके चेंज करके आप इसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अंडरस्टैंडिंग करें बेसिक्स की। जब आप बेसिक्स पे कंफर्टेबल हो जाएंगे ना तो फिर लाइक जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो आपके लिए ईजी होती जाएंगी। लाइक आप जिसमें आपको रेपिटेशंस, लूप्स और इन चीज़ों के बारे में, स्ट्रिंग्स के साथ वर्क करना है कैसे है, जिस तरह आपको कोर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे वर्क करती हैं चीज़ें, तो जैसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या डाटा स्ट्रक्चर में जब आप जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा लर्न करना कंपेयर टू कि आप डायरेक्टली जंप करें उनमें। ये ट्रबल शूटिंग आप इस पे चेक कर सकते हैं कि कोई इशू वगैरह अच्छा आ रहा है कि अच्छा, नहीं। तो समरी में बेसिकली ये जो जी 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 बोलिए। अगर बाद में कहीं प्रॉब्लम आए, नेक्स्ट यूनिट्स में किसी जगह प्रॉब्लम आए हमें, तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी, कोई मसला नहीं। आप जिस टाइम चाहें आपको आईडी मिल जाएगी मेरे लिंक्डइन पे, आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप जहाँ पे कांटेक्ट करेंगे मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा, ऐसा सच कोई इशू नहीं है। बाकी रही समरी की बात, तो समरी यही है जो मैंने आपको डिफाइन कर दी है कि आप कैसे वर्क करेंगे
डॉलर साइन लगा के अपने वेरिएबल्स के साथ, वही चीज़ है। एंड वॉल और वार के बारे में मैंने आपको, हालांकि यहाँ पे वॉल और वार का डिफरेंस नहीं लिखा, बट मैंने आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके बता दिया ताकि आपको इन डेप्थ इंट्यूशन हो जाए कि क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। और लाइक स्ट्रिंग आपको पता होना चाहिए कि दो इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। इंटीजर आपका नेगेटिव वैल्यू से लेके पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हर लैंग्वेज में एक रेंज होती है। अब इसमें आप जाएंगे, आप थोड़ा बहुत सर्च करें स्टैक ओवरफ्लो या डिफरेंट वेबसाइट्स, तो आपको पता लग जाएगा कि मैक्सिमम रेंज नेगेटिव वैल्यू की कोटलेन में कितनी है, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट रेंज होती हैं। सो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद ही आपको मैं बता चुका हूँ कि फंक्शन जो है फन आपका एक कीवर्ड है, और आप कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं, उसमें आप काउंटलेस नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप पुट कर सकते हैं। आपने एज और लेस पुट किया, आप यहाँ पे 2 और ऐड कर सकते हैं, 10 और ऐड कर सकते हैं। बट जब भी आप फंक्शन में आते हैं तो आप एक कन्वीनियंट बनाते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि ताकि रीडेबिलिटी कोड की अच्छी रहे। उसके बाद रिपीट है, इस स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए, जो आपको मैं पूरा प्रैक्टिकल करके बता चुका हूँ। और ये आपका ये लूप वही चीज़ वर्क करता है। रिपीट क्या हम कैसी चीज़ को कहते हैं कि किसी लूप में चीज़ वर्क कर रही है, बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही है, तो इसी को हम लूप कहते हैं। सो नेक्स्ट लूप जो अभी आपको बताया कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगा हुआ था, लाइक रिपीट के अंदर रिपीट स्टेटमेंट थी, तो एक रिपीट स्टेटमेंट के अंदर एक और रिपीट स्टेटमेंट थी। आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, बट लाइक वो इट्स नॉट दैट एफिशिएंट कि आप उसको बड़े स्केल पे यूज़ कर सकें। सो आप आगे जाके जब थोड़ी कम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नेस्टेड लूप्स आपके कहाँ पे लाइक आपको एडवांटेज देते हैं और कहाँ पे डिसएडवांटेज देते हैं। सो दिस इज समरी ऑफ यूजिंग फंक्शन आर्गुमेंट। आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन आर्गुमेंट जिस तरह की लाइक यहाँ पे आप इंटीजर डिफाइन कर रहे थे कि ये आपकी एज है, ये इंटीजर है, इसी तरह आप लेट से कोई आपका स्ट्रिंग वेरिएबल है तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग है। सो ये भी याद रखें कि कीवर्ड आर्गुमेंट में कैपिटल आई स्मॉल जो आपके लेटर्स होते हैं, लाइक इसमें आप जब स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं तो एस कैपिटल होना चाहिए। सो ये बेसिक चीज़ें हैं कि आप आर्गुमेंट में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, जो आपको मैंने प्रैक्टिकल बता दी है। बाकी आप लर्न मोर किस तरह कर सकते हैं, ये कमेंट्स वगैरह के बारे में आपको बता चुका हूँ। सो दैट इज़ नॉट कि आप यहीं पे बस बेसिक्स हैं, इससे और भी चीज़ें काफ़ी आएंगी जो आपको समझनी है, जो आपको लर्न करनी है। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, फिर और आ जाती हैं। जितना आप इस बेसिक्स पे कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगे, सो फिर जब आप डेवलपमेंट पे आएंगे तो लाइक फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपने बेसिक्स कोर अंडरस्टैंडिंग सारी समझ ली होंगी। तो फिर आपके फिर जो ऊपर वाली चीज़ें होती हैं वो लाइक आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी स्विच कर सकते हैं। अगर आपने कुछ करना है, अगर आपको एक लैंग्वेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी कर सकते हैं, क्योंकि अंडर द नीड सारी लैंग्वेजेस सेम वर्क करती हैं, कोई किसी से कुछ डिफरेंट नहीं होती। सिर्फ सिंटेक्स का डिफरेंट होता है, तो आपको उस पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि आप इसको प्रैक्टिस करें। सिंपल चीज़ ये है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जितनी प्रैक्टिकल वर्क होगा, उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी है कि लाइक अगर आप 1 वीक तक करेंगे, उसके बाद आप उसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो इट्स लाइक कि आपकी वो इंट्यूशन नहीं रहेगी, वो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। सो आपने लॉजिक्स इंप्रूव करनी है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएँ, डिफरेंट कोडिंग प्लेटफॉर्म्स, हैकर रैंक, कोडशेफ, कोड फोर्सेस, इन पे जाके आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिस करें। आप अपनी प्रोग्रामिंग इंप्रूव करने के लिए कह रहा हूँ, बट मेन फोकस जो हमारे इवेंट का है वो कि एंड्रॉयड सीखो है। सो आप एंड्रॉयड की तरफ आ सकते हैं। जब आप बेसिक कर लेंगे कवर, तो फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं एज सून एज पॉसिबल, जब भी आप चाहें। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। बाकी आप यहाँ पे क्विज वगैरह दे सकते हैं और आप अपने बैजेस अर्न कर सकते हैं यहाँ पे। Okay, Mohsin, thank you so much. We'll start the quiz thing next. I think Usman is here. Over to you, Usman. Assalamu alaikum everyone. Really sorry for the वालेकुम सलाम। delay. I was like really busy in a meeting and now like abhi main free hu and I've joined as soon as possible. So I really hope कि this entire session was of really Usman, आपका mic I think थोड़ा सा adjust करना है, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है. okay. Can you guys hear me now? Yes, you're audible now. Yep. Okay, great. So I was saying कि unfortunately I couldn't join you guys earlier because I was busy in a very important meeting and जैसे ही मैं free हूँ I've joined you guys as soon as possible. And other than that, I really hope कि this entire session was like really uh, of really good use to you. And I really hope कि you guys got a chance to learn a lot of new things. So, I'll just go over a few things. I'll summarize the entire event. कि what was our entire purpose? कि हमने ये event क्यों करवाया है? And what
like आपके लिए आगे क्या है in the future, and what can you do with all the opportunities that Google is providing to you. So uh, let me just go over a few things. तो अभी आप लोगों ने ये पाथवेज किए होंगे। जो थर्ड वाला है वो तलहा ने करवाया होगा, who is a great guy. I really suggest following him on LinkedIn, Instagram, or whatever social media he's using right now. So you guys can like get in touch with him. And the fourth one was done by Mohsin. He's a great guy, and he's a really like sort of a well-versed guy. So you guys can connect to him via LinkedIn as well. And other than that, yeah, uh, quiz रहता था. Let's take the quiz. तो Yes. आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्विज किस टाइप का होता है. तो basically, let me just go over all of these things कि pathways क्या हैं, units क्या हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि I think they've gone over this stuff. Let me मैं जस्ट आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक सेक्शन किया है, एंड यू नो इट योरसेल्फ कि एक इवेंट में आप पूरा कवर नहीं कर सकते. सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हमने आपको एक डायरेक्शन दिखा दी है. नाउ इट्स अप टू यू कि इफ़ यू गाइस वांट टू फॉलो दैट और नॉट. ओके, तो ये लिंक है. All of these links will be provided on the GDSC IST page and GDSC NUML page as well. You guys can follow these links from there as well. तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोर्सेज आ रहे हैं. एंड्रॉयड के हैं, डिफरेंट पाथवेज हैं. तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपने कौन सा फॉलो करना है? जस्ट हेड ओवर टू दिस पेज. ये एंड्रॉयड सीखो का पेज है, एंड उसमें आप लोगों ने क्या करना है? द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस नीड टू डू इज रजिस्टर हेयर. यहाँ पे अगर आप लोगों ने रजिस्टर कर लिया है, एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो ओवर टू गूगल डेवलपर्स प्रोफाइल. यहाँ पे आप प्रोफाइल क्रिएट करोगे, देन यू नीड टू चेक दिस वीडियो आउट, एंड देन इस कोर्स पे आ जाते हैं. ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है. ओके, सो यहाँ पे 5 यूनिट्स आ रहे होंगे, लाइक देयर आर 6 एक्चुअली. एंड इन 6 यूनिट्स में से आपने 5 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं. और जिस टाइम आप ये यूनिट्स कंप्लीट करोगे, जिस तरह अभी हमने किए हैं, 4 सेक्शंस थे और एंड पे क्विज है, तो आपको एक बैज भी मिलेगा लाइक दिस, which you guys can showcase into your profile as well. You guys can like post it on LinkedIn and all of that stuff. So let's see what do we have here. यहाँ पे भी डिफरेंट पाथवेज हैं. काफ़ी इन्होंने लाइक कंडेंस करके चीज़ें बताई हुई हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है. आई वुड रियली सजेस्ट डूइंग दिस, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ स्वैग्स, बट फॉर द सेक ऑफ योर पर्सनल लर्निंग. आप ये कर लो, आपके पास एक पोर्टफोलियो आ जाएगा विच यू कैन शोकेस, एंड मे बी इवन वर्क ऑन it as your FYP as well. Okay, so these are all of the things that you guys can do, and after that's done, um, you guys can go here. तो यहाँ पे आप स्टडी जैम्स पार्टिसिपेंट का आपको बैच मिल जाएगा, एंड देन यू गाइस नीड टू कंप्लीट दिस फॉर्म. एंड आफ्टर ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डन, व्हाट डू यू नीड टू डू इज एक क्विज होगा जो कि 20th एंड 21st नवंबर को होगा. एंड what you need to do is you just need to pass that quiz, and after you pass that quiz, like you have to achieve 80% of the marks, and then like you will be qualified for the swags, and then आपको swags भेज दिए जाएंगे. And swags में होगा क्या? We've already like shown that. Android cap होगी, stickers होंगे, mug होगा, keychain होगा, and these are like ये ऐसी चीजें you guys can't buy them from anywhere. These are special swags. Anyhow, coming back to this, um, ये एग्जैक्ट चीज़ें आप, या ये जो आपने क्विज की बात की है, क्विज 24th को होगा या जब भी होगा, ये पहले चैप्टर का होगा या ओवरऑल होगा? ये ओवरऑल होगा, क्योंकि इसमें आपको सब यूनिट्स भी कंप्लीट करने होंगे.
और पहले इसकी जो डेट थी वो 1 नवंबर तक थी। और हम सब ने जितने भी GDSC लीड्स थे, हमने गूगल को ये कहा था कि लाइक इट्स रियली लेस, स्टूडेंट्स को के पास इतना टाइम नहीं होता, ना ही और लोगों के पास कि वो इतना जल्दी कंप्लीट कर पाएँ। एंड दे हैव एक्सटेंडेड दिस डेडलाइन। अब जो डेडलाइन है क्या यूनिट्स कंप्लीट करने की, वो 14th नवंबर है। लाइक यू हैव 14, like more than 15 days to complete that, and it's more than enough. आप एक वीक में ये सारे कंप्लीट कर सकते हो, इवन कि आप 2 या 3 दिन में भी कर सकते हो, इफ़ you're ambitious enough. एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आप ये यूनिट्स कंप्लीट कर लेते हो, क्विज़ आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अभी मैं क्विज़ दिखा देता हूँ कि किस टाइप का क्विज़ होगा। अब पहले पाथवे का आप लोग क्विज़ देखो, ये क्विज़ है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ प्रोग्राम? A specific task, a tool that helps you write Kotlin code, a series of instructions that a computer system executes to accomplish some action. A defined set of instructions that tell your computer to print happy birthday. So you guys get an idea कि किस type का होगा, and it's pretty like a basic one. So let's move forward. Which keyword do you use to define a function in Kotlin? So आप लोगों ने ये सेशन अटेंड किया है, so Fun. आप लोग बताओ। FUN fun. One. Someone else? That's a great answer, Humair, but बाकियों को भी participate करने देते हैं। Fun. Okay, great. Okay, now moving on to the next one. Which of the following do you need to create a Kotlin program that prints a line of text? इसमें से क्या क्या required है? Comment describing what your program does. Is it required? Yes or no? इसको No. छोड़ के बाकी सारे रिक्वायर्ड हैं। Okay, let's go for this. Okay, what do you expect this Kotlin code to do? ये क्या करेगा? Any guesses? Print 2 lines of text. Okay, Homer, and someone else? I think Usman, chat में responses आ रहे हैं. So let's Okay, open it. let's see that. Okay, print 2 lines of text. Great. बेसिकली ये आप लोगों से पूछने का मकसद ये है कि आप अभी रिजल्ट्स आप लोग देखोगे, आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि क्विज़ेस इतने मुश्किल नहीं हैं। लाइक इट्स प्रीटी बेसिक स्टफ, बट थिंग इज़ कि आपको एक बार ओवरव्यू चीज़ें लाजमी करनी होती हैं। सो दैट्स वाई मैं आप लोगों से ये करवा रहा हूँ। ओके, हाउ वुड यू मॉडिफाई दिस मेन फंक्शन दैट इट प्रिंट्स अ 6 लेयर केक फॉर समवन्स 4th बर्थडे? एनी गेसेस? Set VL age to 4 and layers to 6. Okay, and Third someone option. else? Okay, we have a lot of suggestions for this one. Yeah. Okay, which of these options correctly calls the function below and passes it as valid input arguments? Let's see. First option. First option. Okay, any other guesses? Let me just like shrink this so you guys can see the screen. Option. Let's do First option. this. Okay, great. Let's just see an overview of this. We have this.
ओके, तो सबमिट करते हैं अपने आंसर्स। An error occurred while creating this quiz. Let's see what's wrong. Maybe I haven't signed in. Let's just go over this again. Let's see. ये देखो, you scored 6 out of 6, and this is all of you guys. Like, you guys suggested the answers. तो इससे आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि these things are not that difficult. So at least उसके लिए एफर्ट तो पुट करें। काफ़ी लोग होते हैं जो कि like they वो देखते हैं कि अगर क्विज है या कुछ और है, दे डोंट इवन पुट एन एफर्ट टू इट। अब इसमें कितनी एफर्ट लगी होगी? अगर आप मोस्ट ऑफ यू आर सीएस स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ऑलरेडी प्रोग्रामिंग आती है, एज मोहसिन मेंशनड इट, कि अगर आपको एक लैंग्वेज आती है तो आपके लिए लैंग्वेज सर्च करना मुश्किल नहीं होगा, और ऐसे ही होता है। सो आई रियली सजेस्ट यू गाइस टू गो ओवर ऑल ऑफ दीज स्टेप्स। जो इन सब के लिंक्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगे। मेक श्योर टू फॉलो GDSC IST पेज एंड GDSC NUML पेज एज वेल। आप लाइक जिस भी सोशल मीडिया पे सर्च करोगे दोनों पेजेस के लिए, आप लोगों को सामने नज़र आ जाएंगे। और ये टाइमलाइन है, आप लोग देख सकते हो। ये यूनिट्स कंप्लीट आपने करने हैं, काफ़ी बेसिक हैं, लाइक देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दैट, एंड यू गाइस कैन विन दिस। और इस इंटायर सेशन की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। एंड कमिंग बैक टू या स्लाइड्स, तो these are some links which I would suggest you guys कि आप लोग follow करो। ये जो entire like sort of presentation है and links है will make sure कि हम अपने pages वगैरह पे put कर दें, and make sure कि आप लोग ये सारे steps वगैरह follow करो, and like follow of the courses and build awesome apps which like not only enhances your portfolio but also helps the community in some way or form. So like that was from my side. And yeah, Farwa, is there anything else you want to say? You can, and otherwise we can end this session. And Yeah, again, nothing much except this was like it was great, this whole thing, and I hope all of you enjoyed it as well. We do use like the Android study jams or Android Seekho के hashtags when you're done with it. That's also mentioned in all the steps. और कंटिन्यू लर्निंग ऑन योर ओन। ये सारे यूनिट्स आप कंप्लीट कर लेंगे तब आपको जाके क्विज, और जैसा कि Usman mentioned, you can get the swags and get recognition for these things. and if you guys have any questions, you guys can ask them. Okay, so I think, wait, how many marks are reserved for the quiz? I think it's a 100 marks quiz, and you have to achieve 80% of the marks. Like जो number of marks हैं, those don't matter. बस ये है कि आपने 80% achieve करने होते हैं. Okay, so any other question? And what is the time duration? जो time duration है, that hasn't been announced yet. Like
देयर माइट बी चांसेस कि उसमें टाइम ड्यूरेशन ना हो, क्योंकि जिस तरह कोटन वाले क्विज हैं उनमें हमारे पास टाइम लिमिट नहीं होती. So there are chances कि इस टाइप का क्विज हो, but there are also chances कि there would be a time limit to those quizzes as well. And yes, we can retake the quiz, but 2 दिन ही होगा तो आपको वही दिन मिलेंगे अटेंड करने के. I have an idea. Yes, Humair ने कहा है कि he has an idea of making an app, and he's saying कि after learning this course, if he can make it. Yes, Humair, you can definitely make an app after completing the entire course. और ये कि not just by completing any module, जो complete 5 units है ना, वो complete करने के बाद you would be capable enough to make your own application which would run in your own mobile. Okay, so any other questions? I guess there aren't anymore. Okay, so I think we should just wind this up. Hadi has a question. Can we link databases with an app? Yes, you can link databases with an app, and it depends upon how you do it. आप उसकी connection strings के साथ भी कर सकते हैं. Every language has that feature कि आप directly database के साथ communicate कर रहे हो. दूसरा option आपके पास ये होता है कि you can communicate to a database using an API. अब API क्या होती है? You might ask. Like it's a whole different topic. I would suggest searching for it. Anyhow, like it's possible. There are many ways you guys can do it. Okay, guys, it was a great session, and I'm really sorry I couldn't join you guys on time. And I really hope you guys had a great time with Talha, Mohsin, and Farwa. And make sure to follow GDSC IST as well as GDSC NUML on all of the social medias, so you guys can get instant updates on whichever event or whichever info are we sharing on that platform. उस्मान भाई कोई क्विज वगैरह नहीं होगा एंड पे? वही वाला क्विज था जो हमने अभी कंडक्ट करवा लिया, और जो क्विज होगा Like that like would be something done. that I attend other sessions, and on the end of the sessions a web name kahoot.it, तो उस Yes, पे वो क्विज कंडक्ट करवाते हैं, एंड इट रियली मेक फन. कहूट का होता है वो मोस्टली यू कैन से कि उन सेशंस के लिए होता है जो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल एंड हैंड्स ऑन होते हैं. दैट्स टू ईज अप पीपल. उन्हें एक रिलीफ देने के लिए होता है. वीर ऑलरेडी लाइक इस सेशन को काफ़ी टाइम हो गए, लाइक 9 PM पे स्टार्ट हुआ था, तो अनफॉर्चुनेटली अभी हम नहीं करवा सकते क्योंकि वी ऑलरेडी टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम. तो इंशाल्लाह इन द ओके, अपकमिंग इवेंट्स हम ज़रूर उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे. इंशाल्लाह. Okay, guys, it was great talking to you, and I really hope you guys had a great time. Make sure to like use the hashtag for the Android Seekho, and do tag GDSC IST, GDSC NUML on your posts about the event, whatever like experience you had, and make sure to follow all of the speakers as well as the hosts, so you guys can like get connected with them. Also, Okay. you must have gotten some feedback forms That's right. to fill about the event if you RSVP'd. So make sure to fill that as well, so we can, take your input and do it better next time. Yeah, that would be Yep, great. already failed. Okay, thank you so much. Okay, I think guys, that's the thank end. you.